हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रॉडवे A2E Academy। मैं विमलप्रीत कौर अज तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रही हूँ कुछ जर्नल क्वेश्चन टॉपिक्स। बिकॉज जर्नल क्वेश्चनस एक इदा का वार्म अप सैशन होंदा है जिहड़ा स्पीकिंग तो पहले होंदा है, एंड जिहड़े जर्नल क्वेश्चनस ने उन्होंने आंसर सही देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो तुसीं लैक कर जाते हो जर्नल क्वेश्चन दे विच ते बहुत ज़्यादा इफेक्ट पैंदा है तुहाडे स्पीकिंग दे क्यू कार्ड ते फॉलोअप क्वेश्चनस दे उत्ते। सो अज का जिहड़ा टॉपिक मैं डिस्कस करन जा रही हाँ, फर्स्ट टॉपिक है स्काई टॉपिक जिहदे जर्नली क्वेश्चन आते हैं अबाउट स्काई स्टार्स एंड प्लैनेट्स। वो क्वेश्चन जोड़े ने थोड़े जे ट्रिकी होंगे ने। यह टॉपिक मेन डिस्कस मैं अज इस करके करन जा रही हूँ बिकॉज देर इज़ अ क्यू कार्ड ऑल्सो विच इज़ अबाउट स्टार्स। सो वैन एवर स्टूडेंट्स हैव टू आंसर क्वेश्चन रिगार्डिंग स्काई एंड स्टार्स दे यूजली गेट कन्फ्यूज दैट वट दे हैव टू आंसर। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं अज तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रही हूँ स्काई के रिगार्डिंग, वो है डू यू लाइक टू सी द स्काई। सो इस क्वेश्चन का आंसर तुसीं जदों भी स्टार्ट करना है यू हैव टू अवॉइड द क्वेश्चन। तुसीं क्वेश्चन रेपिटेशन जिहड़ा है वो आंसर दे विच नहीं करना, रादर यू जस्ट हैव टू स्टार्ट द आंसर विद द रीजनिंग इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 7 और 7 बैंड। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है डेफिनेटली व्हेन एवर आई लुक एट द स्काई आई फील वेरी जुबिलेंट एंड आई फील दैट स्काई इज समथिंग विच मेक्स मी फील रिलैक्सड। सो आई लव टू सी द स्काई। इस क्वेश्चन का आंसर तुसीं 2 तो 3 लाइनों के इस तरीके के नाल खत्म कर सकते हो। नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन है वो है हाउ अबाउट स्टार्स। इस क्वेश्चन के तुसीं सिर्फ स्टार्स के बारे दसना कि तुसीं स्टार्स के बारे की सोचते हो। सो इसका आंसर हो सकता है usually I feel that stars are something which are stones and stars shine with the light of moon and sun and it doesn't twinkle in reality but it just seems us to be twinkling as we can see stars from a far away distance. And whenever I look at the stars I feel that stars are connecting in a symmetrical way, and always when I look at the sky and I look at the stars mainly I try to make some kind of illustrations. The next question which we have is which is a good place to see the stars. सो ਆਪਾਂ इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ ਇਹ चीज़ मैंशन करनी है कि स्टार्स ਨੂੰ देखने ਦੀ ਵਧੀਆ जगह ਜਿਹੜੀ है वो ਕਿਹੜੀ हो सकती है। सो in this answer we can say that usually we cannot see stars easily from the places where we live, as city areas or countries are very much polluted. So it would be better to see the stars from a mountain area, as mountains are clear and it is on high level. So it would be better to see the stars from mountain areas. The next question is, do you know something about stars? As in how about star question we have already mentioned about stars. So इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ simply ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ that there is nothing much which I know about stars. I just know few things about stars, that stars are twinkling because we see stars from far away distance, and also we can say that stars are usually people see at the stars and they make some kind of illustrations or they feel relaxed. That is what I know about stars. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। Then the next question is, do you prefer to see the sky in the morning or in the evening? In this question you can simply say whatever you prefer. So you can say like this, that mostly I prefer to see the sky at night, as in night the sky seems very cool and pleasant as I can see stars, and whenever I look at the stars I feel very relaxed. After that the question is, can you see moon and stars from where you live? In this question you have to answer about your geographical area, that जहाँ जिथे तुसी रहंदे हो उथों दी तुसी moon ते stars easily देख सकदे हो या नहीं। So you can answer that where I live it is pretty clear to see the moon and stars, as I live in an area which does not have a lot of big buildings, so it is clear to see moon and stars from my house. After that the next and the last question of this topic is there a good place to look at the sky where you live? जो मैं क्वेश्चन पहले आंसर किया तो जो यह क्वेश्चन है यह प्रीटी मच सेम है। तुसी सिर्फ इस चीज़ बारे आंसर करना है इस क्वेश्चन के भी कि जिथे तुसी रहंदे हो वो जगह जी है वो सही है टू सी द स्काई और नॉट। सो द आंसर कुड बी द सेम, जस्ट तुसी जी रीफ्रेजल है आंसर की वो थोड़ी जी करनी है एंड थोड़ा जा आंसर अपना चेंज कर सकते हो इस तरीके दैट वेयर आई लिव from that place I cannot see moon or stars very much clearly but it is pretty much visible. इस तरीके दे नाल तुसी अपना शॉर्ट आंसर जिहड़ा जर्नल क्वेश्चन दा है वो दे सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक,
which is travel, and mainly इस question ਦੇ ਵਿੱਚ इस ਜਿਹੜਾ topic है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ space traveling ਬਾਰੇ questions ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. So the first question in this topic is, do you want to live or do you want to travel on outer space? In this question you can answer that I am not very much interested to live on outer space, as I feel that there would be no facilities available on outer space, and if there are any amenities available also, at that time also I will choose to live on earth, as earth is pretty much clean and it has oxygen. After that, the next question is, what would you do if you had the opportunity? So इस question ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ answer ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, if I got the opportunity to live or to travel on an outer space, I would definitely try to grab that opportunity, as it would be a great experience for me to travel in outer space, and I can explore there what kind of things are available and what kind of places or what kind of things are not available there. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ question ਦਾ answer ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. After that, the question is, do you think it is necessary to see other planets? इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ necessity mention करनी है कि necessity है या नहीं है. So you can answer that I feel there is no necessity to see other planets, since we can know about stars from our notebooks also, and we can know about the stars or planets from the internet also. So I feel there is no necessity to see other planets. But if somebody want to know deep knowledge about planets, then only the person have to visit or have to travel to outer space in order to know about the planets. The next question is, when was the last time you traveled? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ question ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਨਰਲ question ਹੈ, ਇਹ outer space ਦੇ ਬਾਰੇ question ਨਹੀਂ ਹੈ. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ simply mention ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ that the last time I traveled was 10 to 15 days ago, when I went to travel with my family, and it was a train travel, and I went for a vacation in Maharashtra. After that, the last question in this topic is, do you like to travel by air? So इस question का भी तुसी personally answer करना है. In this you can say that yes, definitely I love to travel by air, but unfortunately I have not got any chance to travel by air yet, but as soon as I got chance, I will definitely like to travel by air. In this way you can answer your journal questions, and whenever you are answering your journal questions, what you have to do is you need to avoid using a lot of words which are given in the question, and ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ tense ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ question ਦਾ answer ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ journal questions ਦੇ answer ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ tense ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖੇ ਆਪਣਾ answer ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ time ਦੇ ਉੱਤੇ tenses ਦੀ mistake ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So make sure whenever you are answering your journal questions, ਤੁਸੀਂ tenses ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, and ਆਪਣੇ answers ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 to 3 lines at least mention ਕਰੋ. Short answers ਜਿਹੜੇ 1 word ਜਾਂ 1 line answers ਨੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ avoid ਕਰੋ, because ਉਹਦੇ ਨਾਲ examiner ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ English ਨੂੰ judge ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ. ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਰੱਖੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰਦਰ ਆਲਸੋ ਇਫ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਆਸਕਡ ਯੂ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ. ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ. ਧੰਨਵਾਦ.